Hello student, today we do exercise 3.3, sum 3, its remaining part 4 to 6, pair of linear equations in two variables. Question is on your screen. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? First we will do question up to this part. Do let the fixed charge equals to rupees x. Additional charge per kilometer is rupees y. According to question, a journey of 10 km is paid rupees 105. Right hand side will be 105. We have to balance it to the left hand side in variable term. टैक्सी को हायर करने के एक्स रुपीज़ लग गए, उसके बाद जितना आपने डिस्टेंस कवर किया दैट इज़ 10 पर किलोमीटर के वाई रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपने चार्ज किया, दैट इज़ x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105. फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो x तो क्या है, एडमिशन चार्जेस. उसके बाद पर मंथ के आपके अलग से चार्जेस लगते हैं. ओके, लेट मी टेक टोटल मंथ्स 10, तो 10 इंटू वाई दैट इज कॉस्ट. टोटल कॉस्ट इज एडमिशन चार्जेस प्लस monthly charges equals to 105. You can take more examples from your side as you want. Next, journey of 15 km. Fixed charge same. 15y it makes 155. Equation number 1, equation number 2. From first, x is 105 minus 10y. Put x in equation number second. From any of one equation, find a variable, express it in the term of another variable. जो आपने एक्सप्रेस किया है आप उसको अगर इक्वेशन 1 से लेकर आए हैं तो सेकंड में पुट करेंगे, और अगर सेकंड से लेकर आए हैं तो 1 में पुट करेंगे. अब आपने x निकाला इक्वेशन 1 से, पुट कहाँ कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में. पुट इट. इक्वेशन 2 इज x इज 105 माइनस 10y प्लस 15y equals to 155. Solving. Simple solving. When you solve your question, concentrately you have to solve. y10, put it in x. Here fixed charge is rupees 5. x5 y10. Last line. How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? For 25 km, statement is x plus 25y. Fixed charge plus number of kilometers into additional charge per kilometer. Fixed charge कितने हैं, रुपीज़ 5. Additional charge rupees 10. Then 5 plus 250 makes 255.
5. That is your answer. Next, part 5th. A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. We have to find the fraction. Dear student, listen carefully. In word problem question, we have to know the meaning of every word to solve the equation. Like fraction, numerator by denominator, becomes हो जाना, added add करना, numerator जो ऊपर होता है, डिनोमिनेटर जो बाय में होता है, 3 यू नो, ऐड करना, बिकम्स हो जाना, फ्रैक्शन आपने न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फाइंड करना है. इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, इट विल हेल्प यू टू मेक द सिचुएशन. ये आपको हेल्प करेगा सिचुएशन बनाने में. लेट द न्यूमरेटर that is x, then denominator y, fraction, numerator by denominator. According to question, fraction क्या हो जाती है? 9 by 11. We have to balance it. If we add 2 to numerator and also 2 to denominator, cross multiply 11 into x plus 2, 9 into y plus 2. These numerator will same at the same place, and this 11 goes to with x plus 2 and this y plus 2 goes to 9. या फिर हम ऐसे कहें न्यूमरेटर अपनी ही जगह पर रहेंगे. थोड़े से एडमेंट नेचर के होते हैं, तो 11 को जाना पड़ेगा और यहाँ से y प्लस 2 को 9 के पास आना पड़ेगा. ऐसा इसलिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इजीली और ट्रिक ठीक रहती है. 11x 11 2 जा, 9y 9 2 जा, फॉर्म अ सिचुएशन. That is minus 4. After it, equation number second. For the equation number second, we have to add 3, both numerator and denominator. X plus 3 by y plus 3. Fraction is 5 by 6. Same process. Cross multiply. 6 न्यूमरेटर के साथ आएगा और y प्लस 3 राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर के साथ आएगा. सॉल्विंग 6x minus 5y, 15 minus 18, we have 6x minus 5y equals to minus 3, equation number 2. Now we will solve it by which method? By substitution method. When you solve these two equations, we have x equals to 7, y equals to 9. So fraction is 7 by 9. That is your answer. After the part 5th, part 6th is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Here Jacob is father and his son. For form the situation, you should know meaning of every word. Keep concentrate on the question always. 5 year hence बाद में, ago पहले, Jacob
फादर सन इज सन, उसका बेटा. 7 times multiply by 7, 3 times multiply by 3. Let the Jacob's age x year, his son's age y years. According to question, 5 year hence, आफ्टर 5 ईयर जैकब जो है वो 5 ईयर बड़ा हो जाएगा और उसका बेटा भी 5 ईयर्स बड़ा हो जाएगा. बैलेंस करने के लिए बेटे की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सॉल्विंग x + 5, 3y + 15, 3y comes to left hand side, 5 goes to right hand side, x minus 3y equals to 10, equation number 1. 5 years ago, 5 साल पहले, पापा 5 साल छोटे, बेटा भी 5 साल छोटा. We have to balance it and we know that father is always greater than their kids. For balancing it, multiply the age of son by 7. Solving x minus 7y equals to minus 30, equation number 2. Now from first, x is equals to 10 plus 3y. Here put this x in equation number 2. In place of x we will write 10 plus 3y minus 7y equals to minus 30. Solving प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, 3 में से 7 जाएगा, माइनस का 4y, 10 जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपके, माइनस माइनस प्लस, साइन इज ऑफ माइनस, कैंसिल. Here y is 10 years. Now put in x, simple putting, that is 40. Hence the age of father, write down your answer. Age of father equals to 40 years. Father means to say Jacob. And age of his son, that is 10 years, which satisfy the given condition. Keep smiling always.